years of independence, remembering sacrifices of our freedom fighters by organizing this web series to highlight the various dimensions of independence. The Center for Freedom Struggle and Diaspora Studies is organizing today this 47th series of webinar in this context. This has been possible under the skillful leadership and guidance of Honorable Vice Chancellor Sir, Professor Nageshwar Rao, and Pro Vice Chancellor Sir and Director, Center for Freedom Struggle and Diaspora Studies, Professor Satya Kamji. Transformation is seen in all nation states and society. Transformative constitutionalism could be an infusion of liberty or equality, fraternity, and dignity. It may change, but its essence will always be same in a social order or a society. To deliberate on the topic, the limits and limitation of transformative constitutionalism, we have today with us the key speaker, Shri J. Sai Deepak, Advocate, Honorable Supreme Court of India. A very warm welcome, sir. He's a brilliant orator, having vast experience in civil, commercial litigation, including IP litigation, constitutional law, competition law, and arbitration. With this, please permit me to open the session, and let's open the house by listening to our IGNOU Kulgeet. So it is requested to please play the IGNOU Kulgeet. Now I request Dr. Suneet Kashyap, Director, School of Law, to kindly give the welcome address. Dr. Suneet, you are please unmute yourself. Thank you, Gurmeet. आज के कार्यक्रम के पेट्रन माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, सम कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम जी, आज के प्रोग्राम के माननीय अतिथि श्री साई दीपक जी, इग्नू के विभिन्न संकायों के प्रमुख, शिक्षकगण एवं देवी और सज्जनों, मैं विधि विद्यापीठ एवं इग्नू परिवार की तरफ से आप सबका आज के व्याख्यान में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश भारत अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ की तरफ अग्रसर है
और पूरे देश में इसे हम भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी के संरक्षण और माननीय समकुलपति महोदय प्रोफेसर सत्यकाम जी के मार्गदर्शन में इग्नू सेंटर फॉर फ्रीडम स्ट्रगल एंड डायस्पोरा स्टडीज के तत्वाधीन 75वें श्रृंखलाओं का एक विशेष आयोजन किया गया जा रहा है। आज हम उस श्रृंखला के 47वें कड़ी में अपने विशेष अतिथि श्री जय साई दीपक जी अधिवक्ता माननीय उच्चतम न्यायालय को व्याख्यान देने हेतु हमने आमंत्रित किया है। इग्नू परिवार की तरफ से मैं विधि विद्यापीठ की निदेशक आप सबका स्वागत करती हूँ। वेलकम साई दीपक जी। मैं अपने आदरणीय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी वीसी इग्नू जो कि हमारे पेट्रन हैं उनका भी स्वागत करती हूँ। मैं समकुलपति प्रोफेसर सत्यकाम जी का भी स्वागत करती हूँ। मैं समस्त विभाग एवं संकाय के प्रमुख एवं शिक्षक गण तथा वे सभी महानुभाव जो फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े हैं उनका भी स्वागत करती हूँ। आप सभी का आज के व्याख्यान में स्वागत है। Before we move on to the main lecture by respected Sai Deepak ji, I will just present a brief about him. J. Sai Deepak ji is an engineer turned litigator, practicing as an arguing counsel, primarily before the Supreme Court of India and the High Court of Delhi. A mechanical engineer from Anna University, he graduated with a bachelor's degree in law from IIT Kharagpur's law school in 2009 and has carved a niche for himself as a litigator in civil, commercial, and constitutional matters. Over the years, he has been part of several landmark matters, such as the ones relating to the Sabrimala Ayappa Temple, the Sri Padmanabha Swami Temple, and Basmati geographical indications. In 2019, he was awarded the Young Alumni Achievers Award by his alma mater, IIT Kharagpur. Apart from delivering lectures on constitutional issues, he's a prolific writer for leading newspapers and magazines. Today, he's deliberating on the topic, the limits and limitations of transformative constitutionalism. With that note, I once again welcome and invite Shri Sai Deepak ji to give his keynote lecture. Welcome, Sai Deepak ji. Namaste. Thank you so much. I thank IGNU and the organizers for giving me an opportunity to reach out to your vast audience. And I must congratulate Dr. Suneet Srivastava for the Shuddha Hindi because I'm a huge fan of that language. So thank you so much. I'll try and stick to the topic as much as possible and also make it as simple as possible because there's a tendency of lawyers to get very, very technical. But ultimately, at least as far as constitutional law is concerned, I believe that it is important for non-lawyer stakeholders to be able to participate in those discussions. And therefore, constitutional lawyers have a duty not just to courts in terms of assisting courts when the law is made, but they also have a duty to liaise with non-legal public to be able to inform them as to the implications of a certain decision. And that, I think, is one of the roles that constitutional lawyers take upon themselves the moment they start practicing this subject. At the very least, I'm conscious of that particular role. So as much as possible, whenever I get an opportunity to speak on this, I do my best to do justice to this mandate. Wherever possible, I'll also keep this Bhasha Mishrit, so it'll be both Hindi and English. So in that order and not English and Hindi. So as far as the title of the topic is concerned, I've basically called it the limits and limitations of transformative constitutionalism. So मैं इस शीर्षक के परतों को आपके ऑडियंस के सामने रखने की कोशिश करता हूँ. I will try and unpack as many layers as possible. मुझे ये नहीं पता है कि मेरे पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं या नहीं, but प्रश्न तो हैं. So I will certainly try and present those questions, and I'll leave it to the audience to try and understand whether those questions are valid, and if those questions are valid, what should be the right approach to address them, whether we finally arrive at the right answers or not. So when I say limits and limitations of transformative constitutionalism, let me start with the subject first and then speak of its limits and limitations. So the subject becomes
transformative constitutionalism. And the reason why this particular subject or this particular doctrine of transformative constitutionalism is so important today is that it is increasingly becoming the basis for a lot of judicial interventions. That is the relevance, the contemporary relevance of taking up this particular topic. Samvidhan, whether it is a static document or whether it is a document that moves and keeps pace with time, or is it a document that has both, let's say, immutable aspects, which is unchanging aspects, as well as certain aspects which move with time, whether it's a combination of both. These are certain issues that I think are very prasangik, which are very, very relevant. Because ek taraf, we have one judgment from the Supreme Court of 24th of April to 1973, जहां पे basic structure doctrine का उल्लेख हुआ था, where the court effectively said, सत्ता परिवर्तन जितना भी हो, संविधान के साथ छेड़छाड़ की लक्ष्मण रेखा ये है, और इसको एक हद से ज्यादा आप इसको बदल नहीं सकते हैं using the power of an amendment. What is the word for an amendment? Sanshodhan, is it? So yes, using the power of amendment under Article 368, आप एक brute majority के द्वारा इसका पूरा हुलिया नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि संविधान के निर्माताओं ने कुछ सोचकर इसकी नींव डाली थी, और आप इस डॉक्यूमेंट के लचीलेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका नींव जो है आप उसको बदल नहीं सकते हैं. That was more or less the position that the Supreme Court came out with. Now, Supreme Court जब ये judgment deliver कर रहा था, this was in the face of a brute majority under Srimati Indira Gandhi. And इस डॉक्ट्रिन के प्रोनाउंस होने के 2 साल के अंदर ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था in 1975. So therefore, जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट पास करता है कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में, मेरे हिसाब से उस जजमेंट को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के नजरिए से देखना गलत होगा. ये भी देखना होगा कि आसपास के जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थे ये क्या थे, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को जवाब दे रही हैं या उसके हिसाब से रिएक्ट कर रही होती. So which is why it becomes important to understand the context of a certain decision. What are the circumstances in which it has been delivered? Now, so one thing that the Supreme Court effectively says, and I'm not going to get into all the nuances, I'll try and give the big picture points. That basic structure doctrine का मतलब ये है that संविधान में ऐसे फीचर्स हैं जिनको बदला नहीं जा सकता है किसी भी हालत में. And what are those features? चाहे वो separation of doctrine of powers हो, ये हो, so a host of features it identifies. So as part of a democracy, अगर judiciary ने ये तय कर लिया और एक decision ले लिया that इस संविधान के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको कभी बदला नहीं जा सकता है, क्या वो फ्यूचर जनरेशंस के हाथों को बांध रही है? That is one basic question, wherein आपने फ्यूचर जनरेशंस के एबिलिटी को या उनके डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को पूरी तरह से टाई कर दिया है. ये देखने का ये एक नजरिया हो सकता है. बट द सुप्रीम कोर्ट इज बेसिकली सेइंग दैट भारत गणराज्य किन चीजों के लिए और किन मूल्यों के लिए जाना जाएगा, ये संविधान में है. And therefore, notwithstanding the political changes, these are features that cannot be interfered with by anyone, so that certain aspects of constitutionalism and let's call it Republican constitutionalism, कि भारत जो गणराज्य के तौर पे कैसे काम करेगा, उसका मानचित्र कैसे होगा, and what will be the boundary conditions, अगर ये संविधान डिसाइड करता है, ये नहीं हो सकता है कि हर सत्ता परिवर्तन के साथ आप इसको बदलते जाएंगे पूरी तरह से. That's one. So on one hand, you have the basic structure doctrine, which effectively says these are elements which cannot be changed. अब इस नतीजे पे कैसे पहुंचा गया, वो सही था या गलत था, is a different issue. Okay, that's a different issue altogether. But what was the consequence is what I'm trying to present.
ग्रेजुअली उसके बाद ये डिसाइड होता है दैट समय के साथ या काल के साथ आपको संविधान को भी उस तरह से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। एंड इसकी जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट वाज द रीजन फॉर इट? जब लेजिस्लेचर से कुछ उम्मीद होती है कि आप कुछ मुद्दों पे डिसीजन लेंगे और आप डिसीजन नहीं लेते हैं, देन एज अ मेंबर ऑफ द पब्लिक आपके पास 3 ही विकल्प हैं, एंड लेट्स अज्यूम दे आर ऑल नॉन वायलेंट ऑप्शंस। आप लेजिस्लेचर या गवर्नमेंट के पास जाइए, और अगर वहां पे आपकी बात सुनी नहीं जाती है, आपके पास बचता है सिर्फ जुडिशरी का रास्ता। सो देन यू एंड अप गोइंग टू द जुडिशरी सेइंग वी हैव ट्राइड प्रेजेंटिंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू टू देम, बट वो कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, देयरफॉर वी वांट यू टू डू समथिंग। सो एट अ टाइम व्हेन it was felt that both the executive and the legislature were perhaps not doing their job, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का इजाद होता है, where you start moving in that particular direction, so that जुडिशरी के पावर्स को और थोड़ा इलास्टिक किया जाता है, उसको और थोड़ा एक्सपैंड किया जाता है। लेकिन here is where the interesting conflict arises. सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक डॉक्ट्रिन है जो बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, जो ये कहता है दैट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी अपने अपने दायरों के अंदर रहेंगे एंड उस लक्ष्मण रेखा को वो पार नहीं करेंगे। अगर दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, और आपने उसके बाद ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का भी इजाद किया विच सेज अगर लेजिस्लेचर कुछ नहीं करेगी तो हम करेंगे, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का क्या होगा, जो आपके हिसाब से एक मूल सिद्धांत है इस संविधान का। So this is perhaps a very interesting question, which is if the basic structure doctrine is also a finding of the Supreme Court, which protects certain aspects of the Constitution, and which also believes that separation of powers is a critical element of that. And after that, it also says that the Constitution is a transformative document, and uske basis pe the judiciary starts enlarging the scope of its own powers at the expense of the powers of either the legislature or the executive. Is it not undermining the basic structure doctrine itself? This question becomes very, very relevant. The other thing is, क्या ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, आई डोंट अंडरस्टैंड दी और आई डोंट हैव द एग्जैक्ट हिंदी अनुवाद और द उर्दू तर्जुमन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सो आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर सुनीत श्रीवास्तव टू कॉइन अ वर्ड फॉर दिस, बट द पॉइंट इज if transformative constitutionalism is a doctrine which has no Lakshman Rekha, जिसके outer boundaries का कोई नामो निशान नहीं है, does it not give a blank check to the judiciary to enter the realm of lawmaking and legislation, saying legislature कुछ नहीं कर रहा है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा, और वैसे भी संविधान जो है ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है, therefore let us now do what the legislature is supposed to do. So unfortunately, since we have such a negative view of politics and politicians, हमारा झुकाव 9 out of 10 times जुडिशरी की ओर होता है। So let us now consider इसका उल्टा क्या हो सकता है। जुडिशरी के सामने करीब 4 या 4.5 करोड़ केसेस जो हैं पेंडिंग हैं और वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने ही मस्ट बी अराउंड अबाउट 1 million केसेस एट द वेरी लीस्ट यू आर लुकिंग एट, दैट इज द रेट ऑफ पेंडेंसी। वुड वी बी कंफर्टेबल विद द लेजिस्लेचर सेइंग आपसे तो ये संभला नहीं जा रहा है और आपसे ये मैटर्स जो है निपटे नहीं जा रहे हैं, तो हम इसको निपटा देते हैं और आपका काम हम करेंगे। अगर लेजिस्लेचर ये नहीं कर सकती है और एग्जीक्यूटिव ये नहीं कर सकता है, इज द कॉन्वर्स पॉसिबल बाय द जुडिशरी? एक होता है कि जुडिशरी लेजिस्लेचर से ये कहे कि आप इस मुद्दे पे एक डिसीजन अराइव कीजिए, कम आउट विद अ कंक्लूजन ऑन अ सर्टेन पॉइंट, बट उसके एक कदम आगे जाके अगर आप कहते हैं कि नतीजा भी क्या होगा वो भी अगर आपने लेजिस्लेचर को बता देते हैं, विच इज टू से वन इज अ क्वेश्चन ऑफ पेस और गति एंड द सेकंड इज द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन एंड कंक्लूजन,
जुडिशरी एट बेस्ट गति को नियमित कर सकती है और कह सकती है आप थोड़ा आगे बढ़िए और जल्दी बढ़िए, लेकिन नतीजा क्या होगा will not be and cannot be decided by the judiciary. Why? Policy making, law making, social experimentation through laws, all of this is the exclusive and sole prerogative of the parliament. We did not elect judges, we elected representatives in the parliament. If it is a republic and if it is a democracy, the primary mandate is with the parliament. Why is that important? So I've given this unpopular example before. I think professional beggars have a tendency to divide roads between them. ये मेरा इलाका है, वो तुम्हारा इलाका है. Doctrine of separation of powers इसको नहीं कहते हैं. Doctrine of separation of powers का जो sanctity है इस बात से आता है कि जनमानस जो है लॉ एंड पॉलिसी मेकिंग में भाग ले सकती है पार्लियामेंट के सामने, लेकिन जुडिशरी के सामने ये पॉसिबल नहीं है. द फोरम फॉर पार्टिसिपेशन बाय मेंबर्स ऑफ द पब्लिक टू प्रेजेंट देयर कंपीटिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू इज द पार्लियामेंट, नॉट द जुडिशरी. जुडिशरी का काम एक लेजिस्लेशन के आने के बाद शुरू होता है ये डिसाइड करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, उसके पहले नहीं शुरू होता है. So put it in legal parlance, the judiciary's duty is ex post facto, after the fact has occurred, which is after the legislation is passed or enacted, not before that. But if the doctrine of transformative constitutionalism becomes the basis on which the judiciary now takes upon itself even legislative powers, then is the country being run by the parliament or the judiciary? That will be the basic question. And assume for a moment that the judiciary takes a final decision on a particular legislation, and ये सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन ले लेती है कि इस अधिनियम का शेप ये होगा, दिस विल बी द फ्लैश एंड ब्लड कैरेक्टर ऑफ अ सर्टेन लेजिस्लेशन. उसके ऊपर हम कहां जाएंगे? हाउ आर वी सपोज टू चैलेंज इट? व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल to a member of the public who believes that the judiciary has no business passing laws or should not have actually entered this particular realm? आप उसके ऊपर कहां जाएंगे? क्या राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे आप? लेजिस्लेचर अगर अपना काम नहीं करती है तो आप जुडिशरी के पास जाके कहेंगे, इनको डायरेक्शन दीजिए कि वो अपना काम करें, लेकिन उस काम का जो दिशा होगा या फिर उसका नतीजा क्या होगा ये कभी भी कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है. बिकॉज द पार्लियामेंट इन दैट रिगार्ड इज आंसरेबल टू द पब्लिक. और अगर पब्लिक को लगता है कि मुझे इस नीति से मैं असहमत हूं एंड आई डोंट अग्री विद दिस, आपके पास चारा होता है कि आप अगले इलेक्शन में आप इनको एक सबक सिखाएंगे कि हम आपके नतीजों से और आपके पॉलिसी से हम सहमत नहीं हैं. डू यू हैव द ऑप्शन ऑफ वोटिंग आउट एनी मेंबर ऑफ द जुडिशरी? डू यू हैव एन ऑप्शन ऑफ सेइंग आई एम सॉरी, आई डिसएग्री विद दिस? नो. सो द एंटायर गेम ऑफ डेमोक्रेसी इज that different members of the society have the ability to try and put forth their point of view, and जिसकी majority है उसकी policy बनेगी. That is the simple rule. ये majoritarian politics नहीं है, ये democracy का basic setup ही यही है. Democracy fundamentally majoritarian है because it is the rule of the majority. तो अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो आप जुडिशरी के पास जाके ये नहीं कह सकते हैं दैट लेजिस्लेचर मेरी बात नहीं सुन रही है. जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन अ पर्टिकुलर लॉ ओनली इफ इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नॉट बिकॉज द जुडिशरी डिसएग्रीज विद इट और सम मेंबर ऑफ द पब्लिक डिसएग्रीज विद इट. आप एक अधिनियम के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को संविधान पे तोलेंगे और किसी भी कसौटी पे आप तोलेंगे नहीं, नॉट योर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस. आपको अगर कोई कानून पसंद नहीं है वो ऑटोमेटिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता है. अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी को एस्टैब्लिश करने के थोड़े मापदंड होते हैं, कोई कुछ टेस्ट्स होते हैं. जब तक आप उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते हैं आप किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते हैं. सो द प्रॉब्लम टुडे इज ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मेरे मुताबिक एक हथियार बन चुका है जहां पे
डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को पूरी तरह से डाइल्यूट किया जा रहा है. आई एम नॉट सेइंग दैट ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज फंडामेंटली बैड. मैं ये नहीं कहता. समय के साथ चलना एक चीज होता है, लेकिन अपनी सीमा के अंदर रह के काम करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट. सो what are my positions? Point 1. I believe that the basic structure doctrine as well as the transformative constitutionalism as a doctrine can work together. दोनों एक साथ coexist कर सकते हैं. लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर रह के काम करेगा, उसके दायरे के अंदर रह के काम करेगा, ताकि संविधान की जो लक्ष्मण रेखाएं हैं आप उसको पार नहीं करेंगे किसी भी हालत में. अगर आपने ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ज्यादा पावर दिया तो जितने भी बेसिक फाउंडेशंस हैं संविधान के वो पूरी तरह से उजड़ जाएंगे. दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड. सेकेंड, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ये कभी नहीं हो सकता है कि जुडिशरी लॉ बनाना शुरू करे या फिर एग्जिस्टिंग लॉ के विपरीत आप कुछ कहें जब तक आप उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एस्टैब्लिश नहीं कर देते. सो ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अच्छे पहलुओं को मैं आपको समझा देता हूं. सो अज्यूम फॉर अ मोमेंट, ये विशाखा जजमेंट बहुत ही पॉपुलर जजमेंट था. आई थिंक देयर वाज दिस लेडी who was subjected to brutal gang rape in Rajasthan, Bhavari Devi, and इस पे एक मूवी भी बना था. I think Nandita Das played the role of this lady. And sexual harassment के laws नहीं थे, तो ये मैटर राजस्थान से लेके सुप्रीम कोर्ट चला जाता है. जब कानूनी शून्य हो, which is to say that there is a legal vacuum on a particular subject, तब शायद सुप्रीम कोर्ट अपने पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है अंडर अनुच्छेद 141 टू बेसिकली से इस मैटर में न्याय करना जरूरी है, और क्योंकि इस पे कोई कानून नहीं है हम गाइडलाइंस इशू करेंगे. ये पावर भी जो है बहुत ही स्पेरिंगली इस्तेमाल होना चाहिए. The power to create law in the absence of law is an extraordinary power, क्योंकि then the Supreme Court steps into the shoes of the legislature for all practical purposes without public participation. So जब law हो और एक कानून हो तब अगर आपको इतना सोचना पड़ता है, जब कानून नहीं हो आपको इतना सोचना पड़ता है, when there is law to the contrary आपको और भी सोचना चाहिए before you create law. When there is nothing and you want to create something, you need to be cautious. But when there is something and which is to the opposite, you need to be doubly cautious. क्योंकि आप सिर्फ लेजिस्लेचर के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, आप जनमानस के अधिकारों और उनके एस्पिरेशंस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको हक दिया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी उसी को कहते हैं. तो सवाल ये उठ सकता है कि कल अगर मेजॉरिटी कहे माइनॉरिटी का गर्दन उड़ा दो, let them make some stupid law which says off with their heads. Okay, to choose the words of this Red Queen from Alice in Wonderland, whoever she doesn't like, she says off with their heads. Okay, if a law is passed by the majority which is so blatantly unconstitutional, then you can't say that the legislature cannot interfere. The judiciary cannot interfere. तब आपके पास जुडिशियल रिव्यू का पूरा पावर होता है, which is part of the basic structure doctrine, to strike down a law which is on the face of it unconstitutional, which is asamvidhanik. Therefore, there are three elements that become very, very important now. So initially I said the basic structure doctrine, then I said transformative constitutionalism. Now I've introduced the power of judicial review. Okay. So when we bring all these three together, how do we maintain balance? संतुलन कैसे बनाए रखते हैं इन तीन डॉक्ट्रिन्स के चलते? So let me try and articulate that position. 1, start with the premise that making of laws is primarily the domain of the legislature and the exclusive domain of the legislature, especially when it comes to matters of criminal law. Point number 1. Point number 2,
लेजिस्लेचर अपना काम अगर नहीं करती है तो आप पहले लेजिस्लेचर को एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप थोड़ा जल्दी आगे बढ़िए, लेकिन आप दिशा और नतीजे के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं, आप सिर्फ गति पे कमेंट कर सकते हैं। 3, अगर फिर भी कुछ नहीं होता है, then you can use your powers under Article 141 to come out with guidelines like in the Vishaka case. 4, but if there is a law which some people may not like, the Supreme Court cannot use unconstitutionality as a pretext, or no constitutional court can do that to strike down an existing law, because एक fundamental principle होता है constitutional law का, that laws shall be presumed constitutionally valid until proven otherwise. The basic rule is कि आप इसको संवैधानिक मानेंगे जब तक somebody doesn't establish its unconstitutional nature. So the person challenging the constitutionality of a law bears the burden of demonstrating it. The power of judicial review can be exercised with respect to a legislation only to strike down a legislation, but not to create new legislation. The other thing that we also have to realize is that transformative constitutionalism का जो doctrine है, I say this with a lot of honesty and responsibility, is also being used to interfere with social practices by the judiciary. Which is to say, समाज के प्रथाओं के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं जुडिशरी होने के नाते। आप सिर्फ अधिनियमों की बात कर सकते हैं, आप समाज की बात नहीं कर सकते। Your job is to interpret. Your job is to enforce. What? Interpret laws and enforce laws. You can't pick up a social practice from the society and say, now I will sit and examine the constitutionality of a social practice. उस पे डिसीजन लेने की जिम्मेदारी जो है और अधिकार जो है वो लेजिस्लेचर की है एंड गवर्नमेंट की है, जुडिशरी की नहीं है। Unfortunately, I believe that these are first principles and basic principles which are gradually being diluted. Because all of us want to do what we think is right as opposed to what the Constitution says is permissible. So in my opinion, the doctrine of transformative constitutionalism is necessary only to ensure that the Constitution doesn't become a dry piece of document without being alive to the times that we live in. But it cannot become a weapon or a pretext to pass laws and thereby dilute the position of other organs of the state, particularly the legislature. This is my broad position. I think I was given 35 minutes. I think I've spoken for 30 minutes. So if there are any questions, I'm happy to take those questions. Thank you very much, sir. It's a wonderful lecture, and whereby you have pondered upon transformative constitutionalism, its limitation, and a very beautiful. You have tried to analyze the interrelationship between the basic structure doctrine of separation of power, and the judicial review. So it's a very wonderful lecture. So with this, I think if anybody, we can have an interaction. I think Professor Satyakamji. Dr. Gurmeet, Yeah. Professor Satyakam will not be able to join us because he's in a meeting with the Honorable Vice Chancellor. Okay. So I think you can present the concluding remarks and then. Actually, we are really rejuvenated to have Sri Sai Deepak ji with us, and we really enjoyed the lecture. And I was very much enthusiastic as I have heard I have read the judgment of Sabrimala, and that was a wonderful, case from which we could, not all of us had actually, not most of us,
were very much a fan of Sabrimala's case. The judgment of that case. But still, I say that it was a wonderful judgment. If you could just give you could just throw some light on that judgment, because you were the main counsel. So that would be very nice. So just one clarification, because there are seniors in the profession. I was one of the few counsels, not the main counsel. It's very important. Yeah. Second is, since the matter is pending before a 9-judge bench, I will keep my comments very factual and limited. I don't want to say beyond what I think is permissible at this stage. See, the issue is broadly misunderstood in the public domain, because what the issue is not about, I'll clarify that. ऐसा नहीं है कि उस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश पूरी तरह से निषिद्ध है. That is not the case. There is a very specific limitation, which is based on, as I have said, the nature of the deity, which is the deity has a Naishthik Brahmachari character, and उसकी थोड़ी विधि होती है और पद्धति होती है, and therefore there are certain restrictions, just as there are restrictions in certain temples like in Kamakhya and other places, where if the deity happens to be a menstruating deity, there are restrictions on men. Okay? So therefore, in fact, most people don't understand that across Bharat, you have Vamachara principles and let's say which is to say left-handed principles and right-handed principles. Right-handed institutions effectively celebrate brahmacharya to some extent, or they do not worship menstruation, whereas left-handed institutions worship menstruation, Kamakhya being one of those examples. The problem is when we say all temples must observe the same principles and the same traditions. अगर संप्रदाय ही अलग है, क्या आप समानता के नाम पे विविधता को पूरी तरह से खत्म करेंगे? Okay. Equality cannot be the sledgehammer on the basis of which you finish off सांप्रदायिक diversity. Because ultimately संप्रदायों के भी संवैधानिक अधिकार होते हैं अंडर अनुच्छेद 26. Okay. So my entire position was that this was not a question of discrimination, that this is a position of diversity. Okay. Because had it been a position of discrimination, then it would have said, because you're a woman, you shall never enter. No, the point is different. Okay. In fact, I went to the extent of saying it's not just menstruating women, even a bleeding man cannot enter that place, क्योंकि जैसे ही वहां पे it's a tantric temple, जिसके अपनी कुछ पद्धतियां होती हैं, जैसे ही वहां पे रक्त का गिरना होता है, शुद्धि की जाती है, किसी का भी हो, चाहे बच्चे के भी हो, it doesn't make a difference. Okay? These are serious aspects जहां पे आप secular rational logic को उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये secular जगह नहीं है, ये एक religious place है. So therefore, my standard dialogue, so to speak, has been try to understand that there are limitations of secular logic when you try to apply it to a religious place of worship. Secular thinking religion को accommodate कर ही नहीं सकती है, क्योंकि उसके हिसाब से religion fundamentally irrational है और वो सिर्फ belief पे based है. अगर secular thinking का ये fundamental position है religion के संबंध में, how can you apply secular logic to determine what is good and what is bad in a religious place? आपका basic position ही religion के diametrically opposite है. तो अब religious places पे comment कैसे करेंगे without actually being objective? It's not possible, right? So therefore, my entire position was that if you do this, what are you going to do when men will ask for entry in all those places where only women are permitted? What will you do with respect to those temples where only the Tritiya Prakriti is permitted and both men and women want access there? तब आप क्या करेंगे? तो क्या आप transgenders and non-binary genders के rights को पूरी तरह से खत्म करेंगे by allowing us access in the name of equality? This is the reverse discrimination that is capable of happening. Sometimes we have to understand that Bharat is so diverse with such a vast tradition. It is impossible to compare one institution with the other. एक ही देवता के अलग अलग रूप होते हैं. I recently was reading on the concept of a tantric Hanuman. तंत्र में हनुमान जी का position क्या होता है? Because tantra as a philosophy has very different approach. May not be entirely the same as the Vedic approach. Okay? So considering all this,
my position has been that the judiciary must be very, very careful before it interferes with these practices, which have been there for several years. Now, here's the thing. Kal koi kahega, who stops me from chewing tobacco and entering a gurudwara? ये कैसे हो सकता है? It is varjit in that particular religion. फिर हमसे सवाल ये किया जाएगा, आपसे किसने कहा कि भगवान को तंबाकू से प्रॉब्लम है? अरे, then if it is your position that every institution is entitled to its own rules, especially when it happens to be a secular institution, तो क्या religious institutions के कोई rules नहीं हो सकते हैं? आपको बार एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा. You have to have all these qualifications before you talk about the law. अगर ये problem, I mean, if equality is everything, why don't you engage non-lawyers to argue for you in court? Why do you want only lawyers to argue? One, because the law mandates it, and second, there is a subject matter training. Then please respect the subject matter training even in matters of religion. Those people who have decided to dedicate their lives to the